Goa, South Goa. तो अभी हम पहुंचे हैं गोवा वेस पे. So we are traveling to South Goa as I mentioned. Even though I have been to Goa many a times, लेकिन vlog में भी शायद मेरे 2-3 vlog बन चुके हैं, लेकिन I have never been to. So this is the guy I am traveling with, Ketan Pathak. You might have seen him in the Kurde vlog. So South Goa मैंने cover नहीं किया vlogs में, even though I have been there many a times. तब मैं vlog नहीं करता था, लेकिन इस बार टाइम मिला तो मौका है 10 हुए तो लपेट लो. तो hope I'll be able to capture some good sunset का तो पता नहीं क्योंकि पूरा cloudy weather है, लेकिन ड्रोन शॉट्स लेने के पूरी संभावना है क्योंकि लश ग्रीन है जितना भी हम लोगों ने ट्रैवल किया. सो या लेट्स सी यू ऑन द रोड बॉस. Guys, I did not vlog after the Goa ways thing because I was too tired. And actually हुआ क्या कि एक regular road था बेलगांव से, so वहाँ से road block था, so we had to take another route. We are staying in Agonda in a place called Pune. It's a very beautiful place, just a glimpse of it. And I might be doing a small tour for you guys in my stay here, but अभी बहुत थका हूँ. Okay, the reason why I haven't been vlogging since morning because it's drizzling like crazy. थोड़ा सा बीच में ज़ोर से बारिश भी हुआ था, so we couldn't go anywhere because anyway केतन को काम था. और I hope you like the B-roll by the way. Nice place. If you want yoga teacher training, this is a place to be. Peaceful. Agonda beach से hardly 2 minutes की walk पे है, and they have very sophisticated system to stay, and you can have food. They have food over as well, so they arrange food for the students who come here for training. And पीछे पहाड़ है by the way, it comes in the same property, तो पहाड़ पे भी थोड़े से उन लोगों ने huts वगैरह बनाए हैं. So I really love this whole setup, well maintained. Kudos to the management team. अब इतना बारिश हो रहा है फिर भी निकल रहा है बाहर घूमने. इतना बारिश हो रहा है फिर भी निकल रहा है बाहर घूमने. ऐसा ही है. पापा क्या बारिश है, क्या बारिश है. It's raining cats and dogs. Ooh. Okay, that's Shivamurti. Looks dope. It's getting hot today. Yesterday it rained like crazy,
and today it's all sunny since morning. तो हम लोग अभी प्लान है थोड़ा सा बाहर घूमने का. So we have got some time for us. सर जी का काम ख़त्म नहीं हो रहा था और मैं यहाँ पे अकेला रूम पे बैठ के पक रहा था. So right now we have decided to go out. We have couple of places in my कोलाई बीच करके एक जगह है और दूसरा एक बेतुल करके जगह है. So we're not sure if the road conditions are good or not. So we'll take a call once we get out of here. Such a beautiful place. ये ही फ़ायदा है सीज़न में नहीं आने का. It's actually mid September, लेकिन you can see there is almost no one on the beach. Peaceful man. So this beach is तालपोना beach और ये गालजी बाग और राजबाग के बीच में आता है. And this place is beautiful. I think you'd like the drone shots rather than me speaking. Here it is. Those drone shots. Hit the like button if you liked it. This mountain और ये वाला, so this kind of a enclosed beach. रहने की ज़्यादातर व्यवस्था नहीं है यहाँ पे. You can see there are quite a few places over here. और इस साइड पे थोड़े बहुत restaurants हैं, as in just chill over here and enjoy your time listening to the waves. I thank God for the sunny day today. कल ऐसा कुत्ता टाइप बारिश हुआ था. आई नो आई हैव क्रिप्ड अबाउट इट मेनी टाइम्स ऑलरेडी इन दिस व्लॉग, बट यू कैन नॉट इमेजिन. इट वाज सो हॉरिबल. यू माइट हैव सीन इट. लेकिन आज व्हाट अ लवली डे. और आई वाज विशिंग टू हैव वन सनसेट इन गोवा विच इज़ गोइंग टू कम ट्रू टुडे. यस यस यस. Humid. It's getting humid as. Sweating like a pig now. Fine. It's okay. It's okay. Okay. No okay. कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये. काय लका अश्लील बोलायला होता है नुसतं. अश्लील है ये लोंडा. सहस्त्रबुद्धे. इतनी बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास. So this is the bridge I was talking about. इतना टाइनू सा, इतना छोटू सा है. Only one car can fit in. I was lucky that my car is not fat like me. Yes sir. I'll go slow as slow as possible. As slow as possible. And yes, that is the bridge that is appearing on your screen right now. Look at the size of the bridge, man.